Hello, my dear student. In this question, it is mentioned consider the three transaction T1, T2 and T3 and the schedule are S1 and S2 are given below. T1 ट्रांजेक्शन में क्या है R1X, R1Z, W1X, W1Z. T2 ट्रांजेक्शन में R2Y, R2Z, W2Z. T3 में R3Y, R3X, W3Y. And this is the schedule. Schedule number 1 and 2. What is asking? क्या पूछा जा रहा है? Which of the following statement is true about the above schedules? Only S1 is conflict serializable. Only S2 is conflict serializable. Both S1 and S2 conflict serializable. Neither S1 nor S2 conflict serializable. तो अपन conflict serializable कैसे चेक करते हैं? प्रेसिडेंस ग्राफ से. उसमें अपन क्या करेंगे? कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन के लिए एज ड्रॉ करेंगे. आइदर T1 से T2 और T2 से T1. ओके, या Ti से Tj और Tj से Ti. और अगर प्रेसिडेंस ग्राफ में आपके साइकिल आ जाती है, व्हाट वी कैन से साइकिल देन नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियल. नाउ माय डियर स्टूडेंट, दीज आर द शेड्यूल. So here can write the data 1 T and T. First of all, R1X means transaction number 1, read X. R3Y means transaction number 3, read Y. R3X, R2Y, after that R2Z, after that W3Y, after that W2Z, after that R1Z, then W1X, then W1Z, my dear. Here you can see first read X, R1X, R3Y, R3, R3Y, R3X, after that R2Y, R2Z, W3Y, W2Z, R1Z, W1X, W1Z. Now there is a 3 transaction, then we plot a 3 vertex. इन वर्टेक्स आ जाएंगे बच्चों. T1, T2 एंड अब अपन को क्या चेक करना है? कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन. यहाँ रीड एक्स है, के बाद कहीं राइट एक्स है इन अदर ट्रांजेक्शन यानी T2 और T3 में? नो सर. डन, इट्स वर्क डन. रीड वाई, आफ्टर दैट राइट वाई, आफ्टर दैट राइट वाई इन T2 और T1. और T3 है तो T1 और T2 में चेक करेंगे. राइट वाई है? नहीं सर. डन. रीड एक्स, आफ्टर दैट राइट एक्स? यस सर, हियर वी हैव. So what is the sequence? T3 से T1, T3 से T1, then read Y, read Y, after that write Y, after that write Y in T1 or T3? Yes sir, in a T3 there is a write Y, then T2 से T3, T2 से T3, then read Z, after that write Z? Yes sir, T2 से T1, T2 से T1, done. Then write Y, after that any read Y in T2 or T1? No sir. Write Z, after that read Z, that is T2 से T1 already you create. So first of all check, is it cycle? No beta, it is not a cycle, not conflict serializable. You can't say because here not cycle, so it is conflict serializable. क्या कहेंगे? Conflict serializable. And what is the order here? What is the order? T2, T3 and T1. T2 followed by T3 followed by T. This is about the S1. Now check for S2, my dear. 1 T and T3 by. Write down all variables, all operations. R1X, R3Y, R2Y, R3X, R1Z, R2Z, W3Y, W1X and W2Z and W1Z. Clear, my dear student? Here again you can check R1X, R3Y, R2Y, R3X, R1Z, R2Z, W3Y, W1X, W2Z and W1Z. Okay. Now क्या करेंगे? Again same procedure.
create a vertex T1, T2 and T3 and check there is a cycle or not. So first of all here there is a read X. After that in T2 और T3 में क्या right X है? No sir. No sir. Then read Y. After that right Y है T1 और T2 में? No sir. Then read Y. After that क्या right Y है T1 और T3 में? Yes sir. You can see sir here. तो T2 से T3. T2 से T3. Okay. Then here read X. In T3 read X. There is a right X? Yes sir. Here there is a right X. तो T3 से T1. एक एज क्रिएट कर दिया जाएगा T3 से T1 माय डियर. नाउ रीड Z. क्या राइट Z है? यस. T1 से T2. देन रीड Z. क्या राइट Z है? यस. वेयर? T2 से T1. Then write Y, no need to check. Here you can see you are getting cycle. You are getting cycle, then what we can declare? Not conflict serializable, my dear. Not conflict serializable. So here you can see this one is the S2 and this one is S1. So what we can conclude, my dear student, in S1 conflict serializable because not cycle. But in S2 we are getting cycle, then not conflict serializable. So S1 is only S1 is conflict serializable. So A is the correct answer for this question, my dear. Hope so you get it. Thank you everyone.